हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्ट्रोक या सीबीए, जिसको हम सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान जो हमने आपके लिए तैयार किया है, और इसको आप लर्न करें और यूज़ करें प्रैक्टिकल फाइल पर्पज़, एंड आल्सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। मीन्स ये नर्सिंग केयर प्लान एग्ज़ाम में भी लगभग पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड लर्न कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्ट्रोक, जिसको हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्ट्रोक या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीबीए। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम सीबीए के नाम से जानते हैं, इज़ द मेडिकल टर्म फॉर ए स्ट्रोक, जिसको हम मेडिकल टर्म स्ट्रोक के लिए भी यूज़ करते हैं। स्ट्रोक इज when blood flow to a part of brain is stopped either by a blockage or the rupture of a blood vessels। स्ट्रोक मीन्स जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या हमारे ब्रेन में किसी ब्लॉकेज के कारण ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की वो रप्चर हो जाती हैं। इसके कारण सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जो स्ट्रोक या सीबीए का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीबीए। टाइप्स ऑफ cerebrovascular accident। first here ischemic stroke are caused by a blockage, usually clot that block blood flow to the brain। means ischemic stroke means जब हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसको हम कहते हैं इस्चेमिक। और यहाँ पर इस्चेमिक स्ट्रोक मीन्स जब किसी भी क्लॉट के कारण हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इसको कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट हेमरेजिक स्ट्रोक आर सडन ब्लीडिंग इन द ब्रेन सच एज व्हेन एन आर्टरी burst। दिस कैन कॉज द एन्यूरिज्म, हाई ब्लड प्रेशर, ट्रॉमा। मीन्स जब हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई की कोई भी आर्टरी ब्रस्ट हो जाती है, मीन्स फट जाती है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, तो ये हेमरेजिक स्ट्रोक में आता है। और ये एनोरिज्म, हाई ब्लड प्रेशर और ट्रॉमा के कारण ये कंडीशन हो सकती है, तो इसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। मीन्स ब्लड की ब्रेन की ब्लड कोई भी ब्लड वेसल्स की में ब्लीडिंग होना, हेमरेज होना, जिससे ब्लड सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, विच में बी रेफर्ड टू एज मिनी स्ट्रोक, जिसको हम मिनी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ट्रांजिएंट मीन्स बहुत कम समय के लिए। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में बी रेफर्ड टू एज मिनी स्ट्रोक और blockage in the brain that resolve before lasting damage occur। A history of transient ischemic attack can increase the risk of a stroke in the future। यहाँ पर TIA में ट्रांजिमिक इस्चेमिक अटैक में जब ब्लड में कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई का बाधा होती है, जिसको हम मिनी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई में जो भी डैमेज है, ये कुछ समय के लिए होता है, और ये एक तरह से फ्यूचर रिस्क ऑफ होता है। स्ट्रोक मीन्स आगे भविष्य में एक बड़े स्ट्रोक का इंडिकेशन होता है। तो ये था ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। एक बार यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम में इन टर्म्स को। मीन्स दिस इज इस्चेमिक अटैक मीन्स यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो रोक रही है, इस्चीमिया का कंडीशन है। दूसरा रप्चर्ड और हेमरेजिक स्ट्रोक, यहाँ पर रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक के नाम से जानेंगे। तो ये दोनों कंडीशन आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। तो फर्स्ट वाला है इस्चेमिक स्ट्रोक एंड सेकंड हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान के लिए डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मीन्स एक तरह से साइन एंड सिम्टम्स जो हमको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट इसमें डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग, नंबर सेकंड डिफ़िकल्ट इन swallowing and dizziness, loss of balance and coordination. Next, difficulty speaking or understanding other who are speaking. Next, numbness or paralysis in face, leg or arm, most likely on the just one side of the body. Next, blurred or darkened vision, sudden headache, especially when accompanied by the nausea, vomiting or dizziness. These are the defining characteristics means साइन एंड सिम्टम्स जो स्ट्रोक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान। इससे पहले हमने एक जस्ट इन्फॉर्मेशन लिया था सीबीए का। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट है इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, जिसका हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप नर्सिंग असेसमेंट फॉर दिस डायग्नोसिस। जो हमारा बेसिस होगा नर्सिंग असेसमेंट, ऑन दिस बेस वी मेक एयर द नर्सिंग डायग्नोसिस एयर। फर्स्ट असेसमेंट को देखते हैं यहाँ पर। नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट एयर असेस फैक्टर रिलेटेड टू डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन, दिस इज नंबर फर्स्ट असेसमेंट। नेक्स्ट and the potential for increase intracranial pressure. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड असेसमेंट असेस एयरवे पेटेंसी एंड रेस्पिरेटरी पैटर्न। नंबर थर्ड असेसमेंट रिकॉग्नाइज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। एंड नेक्स्ट नंबर फोर्थ असेसमेंट फ्रिक्वेंटली असेस एंड मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ असेसमेंट मॉनिटर computed tomography scan. And number 6 assessment here assess for knuckle rigidity, twisting, increase restlessness, irritability, the onset of seizure activity. तो ये थे हमारा यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट फॉर दिस डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट हमने यहाँ पर एक नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार किया है जो इनफेक्टिव cerebral tissue perfusion related to hemorrhage or clot in the cerebral vessels। तो ये हमारे यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस है इनफेक्टिव cerebral tissue perfusion। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर एक्सपेक्ट आउटकम और गोल्स होगा पेशेंट विल मेंटेन यूजुअल इम्प्रूव्ड level of consciousness, cognition and motor and sensory functions। ये हमारा यहाँ गोल होगा। इस गोल को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट यहाँ इंटरवेंशंस यूज़ करेंगे इन दिस नर्सिंग केयर प्लान। तो फर्स्ट इंटरवेंशन है यहाँ पर हमारा सीबीए का फर्स्ट डायग्नोसिस का इंटरवेंशन एंड देयर रेशनल। दोनों चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशंस। Number first intervention screen the patient for stroke risk are rational for this a healthy lifestyle, exercising, maintaining a healthy weight and following a healthy diet can reduce the risk of having a stroke. Next second intervention position with the head slightly elevated and in a neutral position. A rationale for this reduce arterial pressure by promoting venous drainage and may improve cerebral perfusion. Next number third intervention maintain bed rest, provide a quiet and relaxing environment, restrict visitors and activities, cluster nursing interventions and provide rest period between care activities, limit duration and procedure. Rationale for this continuous stimulation or activity can increase the intracranial pressure. Absolute rest and quiet may be needed to prevent rebleeding.
Next, fourth intervention here, prevent straining at a stool, holding breath, physical exercise, rational for this. Valsalva maneuver increase intracranial pressure and potentiate the risk of rebleeding. Number fifth intervention, stress smoking cessation. There, smoking increase the risk of stroke. Number six, administer supplemental oxygen as indicated here. Risk reduce the hypoxemia. Next, number seven intervention, administer medications as indicated. Number first medication, thrombolytic tissue plasminogen activators TPA, recombinant TPA, RTPA, LTPase. Here, their rationale for this, dissolving the blood clot that is blocking the blood flow. Next medication here, anticoagulants, warfarin, sodium, low molecular weight heparin. Here, intervention rationale number second, to prevent clot formation. Next, third medication here, antiplatelet agents such as aspirin. Here, for this rationale, interfere with the platelet aggregation. Next, number fourth medication here, antihypertensive angiotensin converting engine inhibitors, diuretics here to here. Rationale for this, blood pressure control is essential to decrease the risk of bleeding. Number fifth medication, peripheral vasodilators here. Rationale for this, it is used to improve the collateral circulation or decrease vasospasm. Next, phenytoin dilatin used if there is increased intracranial pressure and occurrence of seizure. And next medication is stool softeners here. Role of stool softeners is to prevent staining during bowel movements and decrease the ICP. Next, monitor laboratory studies as indicated, prothrombin time, activated partial thromboplast time, and dilatin level here. Rationale for this, provide information about the drug effectiveness and therapeutic level. Next, intervention, prepare for surgery as appropriate, endarterectomy, microvascular bypass, cerebral angioplasty here. Rationale for this, it may be necessary to resolve the situation and reduce the neurologic symptoms of recurrent strokes. तो ये था हमारा इंटरवेंशंस फॉर दिस नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं इवेल्यूशन फॉर दिस डायग्नोसिस. यहाँ देखते हैं इवेल्यूशन फॉर दिस डायग्नोसिस. Goal is achieved or not here in evaluation, the improved level of consciousness, cognition and motor sensory functions. तो ये हमारा यहाँ जो इवेल्यूशन है उसमें हमने ये गोल अचीव लिए हैं बाई द वेरियस इंटरवेंशन. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकंड. ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकंड फॉर सीवियर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी. First step of nursing care plan nursing assessment. Assessment number first here, assess the extent of impairment initially and functional ability of the patient. And next assessment here, monitor the lower extremities for symptoms of thrombophlebitis here. On the basis of this assessment, we plan here the nursing diagnosis for patient. तो यहाँ पर हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन सेकेंडरी टू स्ट्रोक एज एविडेंस बाई डिक्रीज मोबिलिटी. तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स. here expected outcomes, patient will maintain increased strength and function of affected or compensatory blood body part. तो ये हमारा यहाँ पर गोल होगा. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन एंड द रेशनल एंड एवेल्यूशन. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट ईयर, परफॉर्म फॉल रिस्क evaluation and enact the appropriate precautions here. Rationale for this, bed alarm and non-skid socks are strategic to avoid fall. Next, second intervention here, coordinate occupational and physical therapy. Here rationale for this, both these therapists are critical to improving
mobility. Next, third intervention, consider constant induced movement therapy. Here, rationale for this type of therapy can improve the movement of the affected extremity by restraining the patient's strong arm. Next, provide appropriate mobility assist device. Here, rationale for this depending on the patient's level of disability, mobility device such as cane, walker, and wheelchair may be needed. Next, intervention, educate the patient or family about the assist device at home. Here, rationale for this, some assist device such as grab bars or shower chair can be helpful to have the installed at home. तो ये हमारे डिफरेंट इंटरवेंशन यहाँ पर कंप्लीट हुए. नेक्स्ट देखते हैं evaluation for this nursing diagnosis goal is achieved or not. Here evaluation for this, and second number diagnosis, here increase strength and function of the affected or compensatory body part. तो ये था सेकंड नंबर डायग्नोसिस हमारे यहाँ पर impaired physical mobility. नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस नंबर थर्ड, impaired verbal communication. ये नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड, impaired verbal communication for CVA. तो आइए देखते हैं इसको हम डिटेल में यहाँ पर. फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट, एयर assess the patient for aphasia. Next, assess the patient for dysarthria. Next, ask the patient to follow simple commands. Next, assess the patient for sign of depression. तो ये थे नर्सिंग असेसमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट we write here the nursing diagnosis for this patient. In nursing diagnosis, impaired verbal communication may be related to impaired cerebral circulation, neuromuscular impairment, loss of facial and oral muscle tone. ये तो हमारा डायग्नोसिस. नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स या गोल्स. हेयर patient will establish method of communication in which need can be expressed and use resources appropriately. तो ये हमारा गोल है. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन to achieving the goal. Here intervention and the rationale also. Intervention number first, listen for errors in conversation and provide feedback. Here rationale for this, feedback help patient realize why caregiver are not understanding or responding appropriately. Next, intervention number second, ask the patient to write their name and a short sentence. If unable to write, have the patient read a short sentence. A rationale for this, test for writing disability, agraphia and deficit in the reading comprehension, alexia, and or also part of receptive and expressive aphasia. Next, intervention number third, provide a special call well that can be activated by the minimal pressure if necessary. Here rationale for this, anxiety related to inability to communicate and fear that need will not be met promptly. Next, intervention here, provide alternative methods of communication. Here for this rationale, a communication board that has picture of common needs and phrases may help the patient. Next, number 5, talk directly to the patient, speaking slowly and distinctly. Here rationale for this, reduce confusion and allay anxiety. Next, number 6, intervention here, discuss family topics, example weather, family hobbies, job, etc. Here
Rationale for this: promote a meaningful conversation and provide an opportunity to practice skill. Next, number 7 here, encourage the significant others to continue communicating with the patient here. Rational, a family member need to continue talking to the patient to reduce the patient isolation. Next, number 8, eliminate extraneous noise and stimuli as necessary. Rational for this: reduce anxiety and exaggerated emotional response and confusion associated with sensory overload. Next, consult and refer the patient to a speech therapist. A rational for this: a speech therapist can help assess the communication need of the patient. तो ये हमारा यहाँ इंटरवेंशन कंप्लीट हुए. नेक्स्ट देखते हैं हम इस नर्सिंग डायग्नोसिस का एवेल्यूशन. यहाँ पर ये हमारा एवेल्यूशन होगा. पेशेंट एस्टेब्लिश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूज रिसोर्सेज अप्रोप्रिएटली. तो ये था हमारा डायग्नोसिस नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4. ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4, इम्पेयर्ड swallowing. ये नर्सिंग असेसमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, expect outcome, intervention, rational and evaluation for this nursing care plan. here first देखते हैं nursing assessment step. here review individual pathology and ability to swallow, noting the extent of the paralysis, clarity of the speech, tongue involvement, ability to protect the airway, episode of the coughing, presence of adventitious breath sound, bait periodically as indicated here. Next, maintain accurate intake output and record calorie count. These are the nursing assessment. On the basis of these assessment, we write the nursing diagnosis here. Nursing diagnosis is impaired swallowing related to neuromuscular and perceptual impairment. Here, expected outcome to reduce risk of aspiration. Here, intervention rational for this. Here, have a suction equipment. Number intervention of first here. Have a suction equipment available at the bedside, especially during the early feeding efforts. Here, rational for this. Timely interventions may limit the untoward effect of aspiration. Next, intervention number 2, assist patient with head control and position based on the specific dysfunction. Here, rational for this: optimal positioning can facilitate intake and reduce the risk of aspiration. Next, place the patient in an upright position during and after feeding as appropriate. Rational for this: to reduce the risk of aspiration by the use of gravity facilitate swallowing. Next, number 4, intervention: provide oral care based on individual needs before a meal. Here, rational for this: a patient with a dry mouth require moisturizing agents like alcohol-free mouthwash before and after eating. Next, number 5, intervention: season food with the herbs, spices, lemon juice, etc. according to the patient's preference within the dietary restrictions. Here, rational for this: increase salivation, improving the bolus formation and swallowing efforts. Number 6, intervention here: serve food at normal temperature and water is always chilled to stimulate salivation. Next, place food of appropriate consistency on the unaffected side of the mouth. Here, rational for this: provide sensory stimulation including taste, increasing salivation and triggering swallowing efforts and enhancing intake. Next, number 8, intervention: touch parts of the cheek with a tongue blade and apply ice to the weak tongue. Here, rational for this: it can improve tongue movement and control necessary for swallowing in and avoid the tongue protrusion. Next, number 9, intervention here: feed slowly, allowing 30 to 45 minutes for meal. Here, rational for this: feeling rush can increase stress and frustration may increase the risk of aspiration. Next, number 10, intervention: encourage participation in an exercise program. Here, rational for this may increase the release of endorphin in the brain, promoting a sense of general well-being and increasing appetite. Next,
intervention here, administer IV fluids, tube feedings. Here it may be necessary for fluid replacement and nutrition if the patient is unable to take anything orally. Next, number 12, intervention, coordinating multidisciplinary approach to develop a treatment plan that meet individual needs. A rationale for this, the inclusion of dietitian, speech and occupational therapist can increase the effectiveness of the long-term plan and significant reduce the risk of aspiration. तो ये थे different intervention and their rationale. Next देखते हैं हम evaluation step for this nursing care plan. तो यहाँ पर हमारा evaluation होगा इस केयर प्लान का, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिड्यूस. तो ये हमारा यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 5. यहाँ पर ये नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 5, रिस्क फॉर डिसयूज सिंड्रोम ऑफ CV पेशेंट इन नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, expected outcome, intervention, regional and evaluation phase for this nursing care plan. Here first देखते हैं nursing assessment. Here assess for subluxation of the shoulder as severe pain and swelling, tingling sensation, inability to move the joint, altered appearance of bony prominence. ये था हमारा assessment. On the basis of this assessment we write the nursing diagnosis for here. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा हमारा यहाँ पर रिस्क फॉर डिस्यूज सिंड्रोम रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट विद लिमिटेड यूज ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स. Here goal for this here to reduce the risk for disease syndrome and here intervention and the rationale for this. Instruct the patient to intervention number first here, instruct the patient to inspect their extremities first, then check the position before ambulating. Here rationale for this, these are safety precautions to avoid falling. Next, second intervention here, provide a pillow or lap board to be used as support in positioning the patient in correct alignment, encourage active passive range of motion exercise, enhance muscle tone. Here intervention for this rational. These interventions aid in maintaining the anatomic position. Number third, rational, instruct the client with a balance problem to adjust by leaning toward the stronger side to ensure correct upright posture. Here rational for this, stroke patient tend to lean heavily to their weak side. Next, fourth intervention here, encourage the use of an arm slings. Here rational for this, the sling support and protect the arm and shoulder while the client is standing or ambulating. Number fifth intervention here, avoid pulling the affected arm, place a hand behind the scapula when moving the upper extremities instead of pulling from the arm. Utilize a lift seat during bed repositioning when the patient is sitting. Provide the arm with a firm support. Here rationale for this, these are the interventions that help prevent subluxation and deformity. Next, intervention number 6, provide instruction on transfer technique utilizing the stronger extremity to move weaker extremities. Here rationale for this, for example, to move the affected leg in bed or when changing from a lying to sitting position. Slide the unaffected foot under the affected ankle to lift support and bring the affected leg along in the desired movement. Number 7 intervention here, instruct the patient to use proper footwear, avoid the use of slippery. Next, here interventions rational here, well fitting footwear help improve balance. Using slippery may put the patient at risk of fall. Next, number 8 intervention, provide a light joint range of motion exercise and proper arm positioning. Here rational for this intervention to avoid shoulder hang syndrome. Next, number 9 intervention, seek a referral to physical therapy and occupational therapy if needed here to improving the functional movement. These are the interventions for this nursing diagnosis. Next देखते हैं evaluation of this nursing diagnosis process.
तो हमारे यहाँ पर एवेल्यूशन होगा द रिस्क फॉर डिस्यूज सिंड्रोम रिड्यूस्ड। तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान ऑफ रिस्क फॉर डिस्यूज सिंड्रोम नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 6। ये नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 6, डेफिशिएंट नॉलेज हेयर। Nursing assessment assess the patient's knowledge about the CBA and its risk factor and treatment plan. Here and diagnosis for this deficient knowledge is related to cognitive limitation, information misinterpretation, lack of recall. Here expected outcome for this to improve the level of knowledge and intervention for this diagnosis to achieving the goal. Here first intervention include significant other and the family in discussion of teaching. Here rational for this these people will be providing support and care, thus have a significant impact on the patient's quality of life and home health care. Next number second intervention, teach the patient and their families member about the CBA and treatment plan. Here rational for this these promote understanding CBA. Next number third intervention, update patients and family member regularly about changes in health status. Here rational for this they provide unique information about the client baseline before the CBA. Next number fourth, discuss specific pathology and individual potentials. Rational for this aid in the establishing realistic expectations and promote understanding of current situation and needs. Next number fifth intervention, here provide written instructions and schedules for activity, medication essential. Here rational for this provide visual reinforcement and the references source after discharge. Next number 6 intervention, here prepare the patient and family for possible need for physical occupational speech therapy and ongoing home support. Here rational for this rehabilitation can be long process that goes beyond the हॉस्पिटल स्टे। तो ये था हमारा डिफरेंट इंटरवेंशंस फॉर डेफिशिएंट नॉलेज डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं इवेल्यूशन फॉर दिस डायग्नोसिस। तो ये होगा हमारा इवेल्यूशन, पेशेंट एंड फैमिली हैविंग एडिक्वेट नॉलेज अबाउट CBA। तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 6। यहाँ पर केयर प्लान था वो कंप्लीट हुआ। This is a last care plan for this CBA disease. तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनन नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।